installed Ganache, and now we'll see. Mm, That's connected. You should see the accounts available in Ganache. So I'm going to select this first account right here. Run tab. Yours is probably... The smart contract's pretty basic. All it really does is... Smart contract election has a variable called candidate name. It also has two functions. In case of election, we call election, candidate name would be selected as candidate name. In case of set candidate, is a function to candidate name. What would complicated smart contracts look like? This also can be a good to do. Ganache is basically, an in-memory blockchain. It's like a one-click blockchain. So this is the only thing that you'll need to download locally. You can download this and install it. And once you open it, it's pretty straightforward, pretty simple. It'll just start. So Ganache, once installed, that I have it installed, it is supposed to provide me a local, let's take a screenshot of it.
local Ethereum chain running. Start running, and you'll have 10 accounts connected to your blockchain. This is still running. Why is it so slow? For free. Ganache is taking so much time to get started. We cannot continue with this video while it is getting started. We would watch some learning video. Maybe pick up some items from to do and do it.
Ganache. Now, the next thing that we need, there are two other things. We need a library that allows our client-side application to talk to our smart contract. Let's study a little bit more on Ganache.
the channel is Dap University. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गिनाश की। तो आइए शुरू करते हैं। तो गिनाश क्या होता है? गिनाश बेसिकली हमारा एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर होता है। जी हाँ, एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक लोकल ब्लॉकचेन अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं, जो कि आपकी एक तरह से पर्सनल ब्लॉकचेन होगी। तो एक लोकल ब्लॉकचेन आप अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को या अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या फिर अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैनाश आपको फेक ईथर्स और एड्रेसेस जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग गैनाश का GUI देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये हमारा गैनाश का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है।
यहाँ पे देखिए हमें कई सारे फेक एड्रेसेस दिए हैं और उन फेक एड्रेसेस के साथ हमारे साथ एसोसिएटेड है उसकी बैलेंस, मतलब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ईथर्स में, ये सारे फेक ईथर्स है। इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, डेवलप डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते हैं अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फेक ईथर्स हमें पहले से ही प्रोवाइडेड है। अगर आप डायरेक्टली डेवलप या डिप्लॉय टेस्ट करते हो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को, लेट्स से मेन नेट पे, मतलब कि आप इथेरियम के मेन नेट पे जाते हो, वहीं पे ये सब चीजें करते हो, तो वहां पे आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर को खरीदने की कॉस्ट होती है, राइट। इसलिए अगर आप मतलब इस तरह से डायरेक्टली करते हो तो ये हो सकता है आपको बहुत कॉस्टली पड़े। तो ये आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है Ganache, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे आप एक सेफ इन्वायरमेंट में, इजी इन्वायरमेंट में अपना कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, हां मेरी एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय हो गई है, सही से रन कर रही है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने मेन नेट पे जाके इसको फिर डिप्लॉय कर सकते हो। और डेट मैंने बताया है कि मेन नेट पे डिप्लॉय करना हो या फिर अगर आपको Ganache पे डिप्लॉय करना हो, तो प्रोसेस पूरा सेम है, कुछ भी अलग नहीं होता है। अगर आप ध्यान से एक और चीज देखेंगे तो ये कुछ सिमिलर लग रहा होगा। उन्होंने ये चीज पहले भी देखी कि एड्रेस उसके साथ ईथर एड्रेस ऑल्सो ईथर, और उन्होंने कहा देखा है ये बेसिकली हम लोगों ने देखा है अपने रिमिक्स आईडी पे। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट्स होते थे और उनसे एसोसिएटेड हमारे पास ईथर्स होते थे, राइट। और रिमिक्स आईडी के थ्रू भी हम लोग क्या कर पाते थे, डेवलप डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते थे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी जो भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, राइट। अब ये क्वेश्चन होता होगा आपके मन में कि अगर हम लोग ये चीज रिमिक्स आईडी के थ्रू भी कर सकते थे तो हम लोग Ganache का यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसमें मेन रीजन ये है कि रिमिक्स आईडी जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, कुछ छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो रिमिक्स आईडी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये अच्छी चीज भी है क्योंकि आपको ये पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देती है, जहां पे हर चीज आपको एक तरह से ग्राफिकली सब कुछ दिखता है और वो चीज हमें अच्छी भी लगती है। मगर जब हम बात करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ट्रफल को, और ट्रफल मेनली यूज करता है Ganache को डिप्लॉयमेंट के लिए। तो Ganache इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप Ganache, मतलब जैसे अगर आप Ganache को जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, वो सारी चीजें आप किसी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और डेट मैंने बताया है कि मेन नेट पे डिप्लॉय करना हो या फिर अगर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर को खरीदने की कॉस्ट होती है, राइट। इसलिए अगर आप मतलब इस तरह से डायरेक्टली करते हो तो ये हो सकता है आपको बहुत कॉस्टली पड़े। तो ये आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है Ganache, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे आप अपना एक सेफ इन्वायरमेंट में, एक इजी इन्वायरमेंट में अपना कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, हां मेरी एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय हो गई है, सही से रन कर रही है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने मेन नेट पे जाके इसको फिर डिप्लॉय कर सकते हो। और डेट मैंने बताया है कि मेन नेट पे डिप्लॉय करना हो या फिर अगर आपको Ganache पे डिप्लॉय करना हो, तो प्रोसेस पूरा सेम है, कुछ भी अलग नहीं होता है। अगर आप ध्यान से एक और चीज देखेंगे तो ये कुछ सिमिलर लग रहा होगा। उन्होंने ये चीज पहले भी देखी कि एड्रेस उसके साथ ईथर एड्रेस ऑल्सो ईथर, और उन्होंने कहा देखा है ये बेसिकली हम लोगों ने देखा है अपने रिमिक्स आईडी पे। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट्स होते थे और उनसे एसोसिएटेड हमारे पास ईथर्स होते थे, राइट। और रिमिक्स आईडी के थ्रू भी हम लोग क्या कर पाते थे, डेवलप डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते थे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी जो भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, राइट। अब ये क्वेश्चन होता होगा आपके मन में कि अगर हम लोग ये चीज रिमिक्स आईडी के थ्रू भी कर सकते थे तो हम लोग Ganache का यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि रिमिक्स आईडी जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, कुछ छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो रिमिक्स आईडी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये अच्छी चीज भी है क्योंकि आपको ये पूरी तरह से आप देखोगे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देती है, जहां पे हर चीज आपको एक तरह से ग्राफिकली सब कुछ दिखता है और वो चीज हमें अच्छी भी लगती है। मगर जब हम बात करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जब हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ट्रफल को, और ट्रफल मेनली यूज करता है Ganache को डिप्लॉयमेंट के लिए। तो Ganache इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप Ganache, मतलब जैसे अगर आप Ganache का जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, वो सारी चीजें आप किसी भी नॉर्मल एडिटर जैसे कि VS कोड जैसे एडिटर के थ्रू भी कर सकते हो। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिमिक्स आईडी में ये फैसिलिटी नहीं है, राइट। रिमिक्स आईडी में सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिडिटी का ही कोड कंपाइल कर सकते हैं, नथिंग एल्स, राइट। मगर हम क्या कर सकते हैं, VS कोड में हम अपने अलग अलग तरह के कोड्स को एक तरह से कंपाइल भी कर सकते हैं, React जैसे हमने फ्रंट एंड बनाया, साथ ही साथ उसी के साथ हम अपना ये सॉलिडिटी का अपना कोड भी लिख दिया और हम लोग उसको वहीं पे कंपाइल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रफल, और वो हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं Ganache। और ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। तो Ganache अगर हम फिर से देखें तो Ganache में भी आप देखेंगे तो हमें कई तरह की चीजें दी हैं, जैसे अकाउंट से चीजें हमने रिमिक्स आईडी पे देखी थी। साथ ही साथ क्योंकि ये हमारा लोकल ब्लॉकचेन सिम्युलेटर है, तो यहीं पे हमारा पूरा ब्लॉक्स आएंगे। जब हम लोग यहाँ पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो आप देखेंगे वो किसी ना किसी ब्लॉक पे आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा तभी जब हम करेंगे ट्रांजैक्शन। यहीं पे हमें सारे एड्रेसेस, ट्रांजैक्शन के एड्रेसेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, सारी चीजें यहीं पे जानकारी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स कभी हमने कोई प्रोजेक्ट बनानी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कभी हमें कुछ नहीं दिखने वाला, इवेंट्स, लॉग्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर पाते हैं। अब जो यहाँ पे अगर आप फील्ड्स देख रहे होंगे, गैस प्राइस, गैस लिमिट, बहुत सारी फील्ड्स मैंने पहले ही बताई है कि गैस प्राइस क्या है, गैस लिमिट क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने अपने इथेरियम के कोर्स में सारी चीजें बताई हुई, राइट। तो हार्ड फोक बेसिकली हम लोग इसका यूज करें, अजीब सा नाम है थोड़ा, न्यूरोग्लेशियर आई थिंक नो। और नेटवर्क आईडी के बारे में मैंने बात की है, जब मैंने टेस्ट नेट और मेन नेट के बारे में बात किया तो मैंने बताया था कि हर एक जो आपका मेन नेट है, टेस्ट नेट, उसकी एक नेटवर्क आईडी होती है। उसी तरह से Ganache की ये अपनी एक नेटवर्क आईडी है और सारी चीजों का, जैसे मैंने कहा, इन सारी चीजों का ये जो आरपीसी सर्वर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजों का हम लोग मेनली प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी के लिए इस कोर्स, इस वीडियो का मेरा पूरा मकसद ये था कि आपको बताऊं कि Ganache है क्या। तो Ganache अगर आपसे पूछे गया है तो सिंपली ये एक लोकल ब्लॉकचेन सिम्युलेटर है बस, जो कि हमें फ्री में, जो कि हमें फ्री में डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट करने में हेल्प करता है हमारी डिसेंट्रलाइज्ड। और इसका प्रैक्टिकल हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज अभी तक बनाए हुए हैं, आप वो भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज हमने कंप्लीट किए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं डेफिनेटली सारे कमेंट आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भाई Ganache और टेस्टनेट में डिफरेंस क्या होता है। Ganache को भी हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं और टेस्टनेट को भी हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए ही यूज करते हैं। तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जब दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं तो क्यों हम लोग कभी Ganache का यूज करते हैं और क्यों हम लोग कभी टेस्टनेट का यूज करते हैं। तो ये इसको समझते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें Ganache की, तो Ganache एक लोकल ब्लॉकचेन सिम्युलेशन है जो कि हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है। मतलब कि Ganache एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है, राइट। हम सिर्फ हम ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं हम बात करें टेस्टनेट की, तो टेस्टनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। टेस्टनेट क्या होता है, टेस्टनेट वो नेटवर्क होता है हमारी नोड्स का, जहां पे रियल, मतलब जब बात करें अगर हम ईथर की या फिर बात करें इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो वहां पे रियल ईथर में ट्रांजैक्शंस ना होकर फेक ईथर्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ताकि हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को चेक कर सकें। और इस पे भी मैंने वैसे वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें Ganache की, तो Ganache में माइग्रेशन टाइम काफी ज्यादा कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें टेस्टनेट की, तो माइग्रेशन टाइम टेस्टनेट का काफी ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों है?
क्योंकि भाई गैनाश को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये एक लोकल ब्लॉकचेन है जो हमारे सिस्टम पर रन करती है। तो क्योंकि ये हमारे सिस्टम पर रन कर रही है तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये हमारे सिस्टम की रिसोर्सेज यूज करती है और माइग्रेशन हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें टेस्टनेट की, तो टेस्टनेट जो है वो बिहेव करता है हमारे मेन नेटवर्क की तरह, राइट? क्योंकि टेस्टनेट क्या है? टेस्टनेट इज जस्ट लाइक मेन नेट का एक टेस्टिंग वर्जन। तो क्योंकि ये मेन नेट की तरह ही बिहेव करता है, तो मेन नेट में जितना टाइम लगता है माइग्रेशन होने में, मेन नेट में जितनी जो चीजें होती हैं, ठीक उसी तरह से टेस्टनेट भी वर्क करता है और इसीलिए माइग्रेशन टाइम टेस्टनेट का गैनाश के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैनाश ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू टेस्टनेट, क्योंकि भाई अगर आपको लेट्स से कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करना है तो आपको 15-20 सेकंड का वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने टेस्टनेट पे किया है तो मुझे भी 15-20 मिनट ट्रांजैक्शन का वेट करना पड़ेगा। इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, गैनाश पर तुरंत से अपनी फंक्शनलिटी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकता है, चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, इवन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप अपने सिस्टम पे तुरंत चेक कर सकते हो। आपने देखा भी है जब भी मैंने गैनाश पे कोई माइग्रेशन किया है तो वो 1-2 सेकंड में ही हो जाता है। टेस्टनेट पर कोई मैं माइग्रेशन करता हूँ तो वो 10 to 15 सेकंड या फिर उससे भी ज्यादा लग जाता है। बट क्योंकि गैनाश एक लोकल ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है, यहीं पे ये मात भी खा जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी फाइनल टेस्टिंग के लिए गैनाश का यूज करते हो, आपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाई और आपने सोचा मैं इसको फाइनल टेस्टिंग ना गैनाश पे करूंगा, तो गैनाश पे डेफिनेटली आपकी टेस्टिंग तेजी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, बट स्टिल वो रिलायबिलिटी आपको नहीं मिलेगी कि एक्चुअली में आपकी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि गैनाश क्या है? ये एक लोकल चीज है, ये हमारी मेन नेट की सिमुलेशन नहीं है, जबकि टेस्टनेट में ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने बोला टेस्टनेट क्या है? ये हमारा एक तरह से टेस्ट नेटवर्क है जो कि मेन नेट पे ही बना है। मतलब जिस तरह से मेन नेटवर्क वर्क करता है, उसी तरह से हमारा टेस्ट नेटवर्क भी वर्क करता है। तो अगर आपको रिलायबल टेस्टिंग करनी है, एक तरह से मैं कहूंगा फाइनल टेस्टिंग करनी है अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की, तो आपको टेस्टनेट पे जाना चाहिए, ना कि गैनाश पे। डेफिनेटली आप गैनाश का यूज करिए क्योंकि आपको जल्दी अपनी फंक्शनलिटी चेक करनी है कि आपका फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इवेंट्स वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज आपको तुरंत चेक करनी है। आप वेट तो करोगे नहीं, 10-15 सेकंड बाद चेक करोगे मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, उस केस में आप गैनाश यूज करोगे। बट जब आपको फाइनली अपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब मेन नेट पे डिप्लॉय करना होगा तो उस केस में आप लोग टेस्टनेट का यूज करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा कि हमें कब गैनाश का यूज करना है और कब हमें टेस्टनेट का यूज करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से करिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूं, रेगुलरली मेरे चैनल पे नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। While you're doing Web3 development or following my dev tutorial earlier, I suggested that you want to use faucets or testnet accounts, but I also want to show you another way, and that is to use the accounts that Ganache brought you with. So the first step to have Ganache installed also goes without saying that you want to have MetaMask installed. So let me open up my browser, search for Ganache installation, and then click on the quick start. Just go ahead and install that. So if you're on a PC, it would ask you to install that on a PC, but if it detects that you're on a Linux, it will ask you to install that on a Linux, same for Mac. And then head over to metamask.io, make sure that you install MetaMask as well on your browser. It has supports for Chrome, Firefox, Brave, Edge. I already have it installed, so I'm just gonna This is Sam. Sam uses the internet just like the rest of us. Lots of apps she uses seem to be free, but they actually come at a cost. She knows the internet isn't very secure and strangers own her data. Credit cards are stolen, identity get hacked. She has to navigate a maze of ads just to surf the web, and she knows someone is always watching. But she's heard there's a better way. And then Sam sees it, the promise of a new internet. Powered by the Ethereum blockchain. An amazing combination of technologies the world is building together that are reinventing how we connect to one another. And it's just within her reach. But to access this new world, she needs the right tools. Meet MetaMask, your connection to the new web. MetaMask is the tool Sam needs to access this new world.
It's a key that connects her to new types of applications. It's a wallet that keeps her data and valuables safe and sound. And it's a shield that protects her from hackers and data collectors. With MetaMask, Sam is ready to explore this new internet safely and securely. The possibilities are endless. Sam can use next-generation applications that give control back to the users and the community, own her data and move seamlessly between sites, and send money across the world at a fraction of the cost. Create new organizations with new currencies that bind her communities together. Crowdsource projects and art, or invest in other people's creations. Sound too good to be true? Well, with great freedom comes great responsibility. Sam controls her own identity on this new internet. No more new passwords for every site she visits. Just a secret phrase that controls her accounts. This phrase is her login, her password, and her proof of ownership all wrapped up in one. So Sam has to keep it as safe as she possibly can. Now that she's installed MetaMask, Sam's ready to explore the best version of the internet. Vote, crowdfund, buy stuff, publish writing, make art, hire freelancers. What will Sam do first? Whatever she wants. The internet is hers to explore. Welcome to a new kind of internet. Welcome to MetaMask. Gonna skip this step, but if you don't have that, make sure you install that and then create an account on MetaMask. Once you've done the steps above, open up Ganache, and this should be the screen you see. So click on the quick start and you should see that there's accounts, blocks, transactions. What you really want is accounts. And Ganache by default create 10 dummy accounts for you. So these are all the 10 different accounts. They have their own private keys. That's something that we're going to be using. And if you click on show keys, it gives you the private key. So what you want to do is to just copy this and put them somewhere. Store them somewhere. Just copy and then say done. Then I want to shift your attention to the network ID and the RPC server. It's saying that it's listening here. It's actually at 127.0.0.1. That's your local host, and at 8545. That's your port number. So if you're using an older version of Ganache, I believe it's 7545. But I think if you're watching this video in 2022, it should be 8545. This is the latest version. At least that's what that's what I have here. So if this is not 8545, it's something else. You just change that accordingly. You can also head over to the settings and then click on the server, and you will find the host name. This is your local host. If you don't make any changes, that should be the local host 127.0.0.1, and then there's a port number. Again, this is 8545 for me. It may be different for yours, but I believe it should be either 7545 or 8545. On a later version of Ganache, it should be 8545, and then there's a network ID. You don't have to make any changes to anything in here. Just note them somewhere, because now we're gonna go back into the browser, add this onto our Web3 wallet. So MetaMask is going to be able to recognize this server and listen to that, connect with the Ganache chain on your computer. So now that you have MetaMask installed, click on MetaMask. Within this, there is the networks. In here, you want to say add network, right? So just click add network. So click on that. It will ask you to enter a few details. MetaMask is a new way to connect to sites and applications.
On traditional websites, a central database or bank is responsible for controlling and recovering your accounts. But on MetaMask, all of the power belongs to the holder of a master key. Whoever holds the key controls the accounts. Your secret recovery phrase is your master key. It's a series of 12 words that are generated when you first set up MetaMask, which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access. It's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe and very secret. If anyone gets access to it, they will have the master key to your wallet and can freely access and take all of your funds. To secure your MetaMask wallet, you'll want to safely save your secret recovery phrase. You can write it down, hide it somewhere, put it in a safe deposit box, or use a secure password manager. Some users even engrave their phrase onto a metal plate. Nobody, not even the team at MetaMask, can help you recover your wallet if you lose your secret recovery phrase. If you haven't written down your secret recovery phrase and stored it somewhere safe, do it now. We'll wait. And remember, never share your secret recovery phrase with anyone, not even us. If anyone ever asks you for it, they're trying to scam you. That's it. Now you know what a secret recovery phrase is and how to keep your wallet safe and secure.
details here. So there's the network name. Here it should be either 7545 or 8545. On a later version, recognize this server and listen to that connect with the Ganache chain on your computer. So now that you have MetaMask installed, click on MetaMask. Within this, there is the networks. In here, you want to say add network, right? So just click. Add network. So click on that. It will ask you to enter a few details here. So there's the network name. Here you just want to give it a name that you can recognize or something you can easily identify with. You can call it localhost, you can call it Ganache NAC, whatever you want to call it, right? I could just maybe put localhost and I just want to say it's 8545. RPC URL, that's what you see on Ganache earlier. So I'm gonna have HTTP and then localhost. Mine is 8545, so that's what I'm gonna be entering. Okay. So it says that this URL is currently used by the localhost 8545 because I already have one. So let me go ahead and just delete that, kick that out, delete that. And now it's gone. Maybe put localhost and I just want to say it's 8545. And then there's the network ID. You don't have to make any changes to anything in here. Just note them. Somewhere, because now MetaMask is going to be able to recognize this server and listen to that connect with the Ganache chain on your computer. So now that you have MetaMask installed, click on MetaMask. Within this, there is the networks. In here, you want to say add network, right? So just click add network. So click on that. It will ask you to enter a few details here. So there's the network name. Here you just want to give it a name that you can recognize or something you can easily identify with. You can call it localhost, you can call it Ganache NAC, whatever you want to call it, right? I could just maybe put localhost and I just want to say it's 8545. RPC URL, that's what you see on Ganache earlier. So I'm gonna have HTTP and then localhost. Mine is 8545, so that's what I'm gonna be entering. Okay, so it says that this URL is currently used by the localhost 8545 because I already have one. So let me go ahead and just delete that, kick that out, delete that. And now it's gone. So if you have that already, you want to just delete that. For the tutorial, I've done that already, but I've just kicked that out and now it's allowing me to quit that again. So chain ID is just going to be 1337. I believe it's kind of a meme. If you turn the letters upside down, it reads LEET, I think, lit. I think it's a meme. And its currency symbol in here, I'm just going to say it's if. There is an optional field of block explorer URL. We don't have that, so we're just gonna say save.
and now it's done. So now that you're connected to localhost 8545, you should see that your account have no if in here. So remember in step 2, I've told you to copy the private keys. So that's where it comes in here. So that's where it comes in handy. Just copy that again, say done, get back to your browser. You could do it from this interface or you could do it from this interface. It's completely up to you, alright? But let's say you want to do it from here, then what you want to do is to say, click on your profile and then say import account, not the create account, import account, alright? So click on that this interface or you could do it in here. So remember, upside down it reads LEET. Field of block explorer URL, we don't have that, so I think it's a meme, and its currency symbol in here reads LEET, I think. Lit, I think it's a meme, and its currency symbol in here, I'm just gonna say it's if. There is an optional field of to localhost 8545, you should see that your account have no if in here. So remember in step 2, I've told you to copy the private keys. So that's where it comes in here. So that's where it comes in handy. Just copy that again, say done, get back to your browser. You could do it from this interface or you could do it from this interface. It's completely up to you, alright? But let's say you want to do it from here, then what you want to do is to say, click on your profile and then say import account, not the create account, import account. Alright, so click on that import account and select type. That's the private key, that's the JSON file you want a private key. It asks you to enter your private key string here. This is what you copied, so just enter that. And in my case here, it says the account you're trying to import is a duplicate because I already have that account, so I'm just gonna copy another private key from account private key number 2 from account number 2, and I'm just gonna say okay, and gonna paste a separate one, and I'm gonna say import, and now it's done. Alright. Hi everyone, I am Shubham Garg and welcome back to the lecture series for blockchain. So in today's lecture we are going to see some practical aspect of blockchain, that is we will be creating our own local blockchain and we will try to send and receive ethers. Okay, that is we are going to use Ethereum. Alright, so let us begin by the tools installation. So here you can see on the slides yeah. Just a second. Yeah, okay, so here are the tools that we need to install for the demo. Okay, we don't need to install all of these tools, we just need to install this Ganache. Okay, having 100 ethers by default, and here a transaction has, see on clicking it, it is redirecting to the MetaMask page. So here you will have this same page. So just click on I agree to MetaMask, and here you have two options: create a new wallet and import an existing one. So I will show you how to create a new wallet, and basically I won't be creating a new wallet. What happens that in wallet creation it will have a two-way security, that is one with the password, your password, and other will be a 12 or 16 word seed phase, that is a phase of random words. And for example, if your system gets formatted or you remove the extension from Chrome,
or something, then your wallet can be imported with that phase. All right, so it is very important to keep that phase in a same. Place, because if that phase is lost, that 12 word phase is lost, you will not be able to recover your account in any case. All right, so just need to click I agree. Okay, before that, let me show you the import an existing wallet option. You will see it will ask for the seed phase. So I agree. You can see here it is for the security, it is saying I have a 12 word phase. All right, so I will show you an example of writing my own 12 word phase to recover this account. Okay, so this is how this account is basically recovered. So first of all, I will show you how to create a wallet. Here is the create a wallet option. Click on I agree, and here you will be create a password. Okay, and you need to confirm the password. So I have created a password and I have confirmed it. So here this password will be using for login. Now here it is also going to use a short video to learn about the security recovery phase. All right, so you need to go click on this secure my wallet option. All right, so here you will go for secure my wallet, and here now you can see this is your 12 word phase. So you need to make sure that no one is looking, and this is your 12 word phase, and you can click on reveal secret recovery phase. Okay, so I am not going to reveal any secret recovery phase right now. Okay, once you confirm it, you will have your wallet. All right, so this is how you create a wallet from MetaMask. Once your wallet is created, you will see it is going to look like this. So you can see this is how this thing is going to look. And Ganache is started. So once Ganache is started, just click on quick start Ethereum. So it is going to create a local blockchain. Meanwhile, I will show you in this MetaMask. So here these are the networks, different kind of networks. So you see this is the Ethereum mainnet. That is the main Ethereum blockchain. All right, you can actually send or receive ethers at this network. And basically, if you want to send or receive ethers, you need to use this network. So this is an original network. So we can't make transactions on original network because we need to have actual ethers. But we are not having that. So we will create a local blockchain using Ganache, and that we are going to use for our network. All right, so you can see here local blockchain is there, and you can see as it is already in my Chrome. So for welcoming back, it is asking only for password. All right, and if by chance this extension has removed or something, I need to import it using the recovery phase, as you saw just a few minutes before. All right, so I will just accept. Okay, yeah, so you see this is some of the transactions during March 25, 26 and all. Anyways, there are different accounts here. Are having 0 ethers. Let me just switch the network. Let's see in this account.
So I will let's see a Ganache. Yeah. So you can see now our Ganache is working, and you can see that these are giving all this network ID, gas limit, server, and everything. And these are the addresses and balance, as I told you that this is 100 ethers. All right. So here you can see the keys. That is the account address and the private keys. As I told you that the blockchain has two keys, private and public key. So we will be using the address of the account for sending. That is for as a public key, and we have our private keys. All right. So now let's go back to the slides. Okay, just a second. Okay, so yeah, anyways, so now what we need to do is you need to add this thing to our MetaMask, that is add the local blockchain network in MetaMask by entering this RPC URL chain ID. Okay, so these are the values, default values, which you need to add. Okay, so let's add this thing. So in the MetaMask, first of all, default values is this, that is the chain ID. So just open your MetaMask. And click on add network. So it will give you an option to add a network. So we will be adding this network from Ganache. All right. So here when you scroll, yeah. So just refresh it. This thing can happen to you as well. So don't worry about it. You will add a network, name it Ganache, and this is our URL. Error in connected one as well. So that's okay. So I have already created a password here. So I will just pause the video here. I will take this, write the secret recovery phrase, and then I will contract in the blockchain. And that's what Web3.js is. This is the Web3 library, which is what we'll use to connect our smart contract to our. So for the smart contract, we will develop this in Remix, which is a browser-based IDE that allows us to, write our smart contract and compile it and run it. We also need a blockchain to deploy our smart contract to, and for local development purposes, we will use Ganache, put out by the creators of Truffle, the framework that I use in my other tutorial. And Ganache is basically, an in-memory blockchain. It's like a one-click blockchain. So this is the only thing that you'll need to download locally. You can download this and install it. And once you open it, it's pretty straightforward, pretty simple. It will just start running, and you'll have 10 accounts connected to your blockchain for free. Now, the next thing that we need, there are two other things. We need a library that allows our client-side application to talk to our smart contract on the blockchain. And that's what Web3.js is. This is the Web3 library, which is what we'll use to connect our smart contract to our front-end application. The last thing that we need is a browser extension that converts our modern web browser into a blockchain browser, because most web browsers don't support this out of the box for free. We will use MetaMask, which is a Chrome extension that will allow your browser to talk to the blockchain. It's pretty simple to install. You just add it to your Chrome extensions and set it up. If you need help setting this up, I walk you through setting up MetaMask and a couple of these other libraries step by step in my other tutorial, where I walk you through building your first decentralized application. And I can post a link to that down in the description below. So let's go ahead and dive in. First, let's look at our smart contract code and also kind of the client-side application that we'll be developing. This is pretty simple. I'm going to post a link to this in the description below. This will be deployed to GitHub. So essentially what we'll do is we'll have a really basic, index.html file that will have our application layout, and I'll write some JavaScript down here, and we will use this smart contract that I've written. It's just a really basic contract, and we'll just kind of copy and paste this into Remix in order to compile it and deploy it. Now you'll see some other stuff in here like CSS, fonts, and JavaScripts, and this is really all just external libraries that I've imported so that we can get up and running quickly. And specifically, it's just the Bootstrap library so that we can have some nice looking UI. And the other main component is the actual Web3 library that I mentioned a second ago. And this is the library that we'll kind of look at in depth or in detail when we develop this little front-end application here. So let's take this smart contract. We'll copy it. And this is kind of the beginnings of the smart contract that I build out in my other tutorial, where we build a full voting decentralized application. Go ahead and paste in your smart contract code. So let's take a look at this. For just 1 second. This smart contract's pretty basic. All it really does is
display a candidate name. We'll just read the candidate name here. This is going to be our only candidate in this election. And it also allows us to just update this candidate name. And in the other tutorial, I kind of walk you through how to, we can add candidates and we can vote for candidates and we'll tally up votes. But for now, we're just going to do something very simple. Ending the stream here, I'll start another stream because I would need to change the title. It has to be a different video altogether.